ओके, सो बेसिकली आज का एजेंडा सुन लो। आज का एजेंडा ये है कि हम सर्कुलर मेजर करेंगे कंप्लीट विद पास्ट पेपर क्वेश्चंस। वी गोना डू अ हैंडफुल ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस बिकॉज ये टॉपिक में आउट ऑफ 10 आई वुड से 8 क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन बीच में दो सवाल जो हैं जरा थोड़े मुश्किल आ जाते हैं। ठीक है, सो या we're gonna do some questions from the book first, ठीक है, and then we're gonna do some past paper questions. So अगर टाइम बचा एंड में, so we'll do some क्या बोलते हैं, we'll start a new topic also। ठीक है, अच्छा, so this is one question that I'm gonna solve। ठीक है, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके सर्कुलर मेजर में काफी आते हैं, सर्कुलर मेजर में, एपीजीपी में, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई होती है। इस तरह का हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, where you weren't given a value and you just had to play around in terms of r। ठीक है, यहाँ पे भी इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। यू कैन सी कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वैल्यू फॉर यू टू स्टार्ट ऑफ विद। अच्छा, उससे होता क्या है, व्हेन यू डोंट हैव अ वैल्यू, स्टूडेंट्स इमीडिएटली क्या होता है, स्टूडेंट्स इमीडिएटली एक पैनिक मोड में चले जाते हैं कि भाई इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, व्हाट डू आई डू। अब द थिंग इज यू आर नॉट अलोन हियर। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो आपके लिए नहीं है, किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, so whatever information that you're provided with, you got to work with that information only to get whatever the question is asking you to find। ठीक है, अच्छा, so अब scene ये है, it says the diagram shows two circles with radius r centimeter, the center of each circles lie on the circumference of the other circle, find in terms of r the exact area of the shaded region। exact area का मतलब कि अगर कोई रूट फॉर्म में तो उसको हम रूट फॉर्म में रखेंगे, so on and so forth। ठीक है, अच्छा, अब let's see what the question says। You need to find the exact area of the shaded region। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, पहले तो एक आप जनरल एडवाइस लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस व्हेन यू नॉट टू श्योर, सो मेक श्योर दैट यू हैव अ पेंसिल विद यू, सो you can use a light pencil and just mess around with the figure। ठीक है, just make some lines here and there until something finally clicks to you। ठीक है, अब ये जो दो सर्कल्स हैं आपके, ये दोनों आपके इक्वल लेंथ के हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इफ आई make a line over here, the one that I've made in red, so technically ये क्या है वो, what would you name this length relative रेडियस। to the circle? It's the radius of the circle, absolutely, because it's running from the center to the other center। ठीक है, and then if I make a line here, तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होएगा। ये भी रेडियस होगी, और if I make a line here, नहीं ये ये भी 10। रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा आपका। क्यों, अच्छा, और ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं। ठीक है, so that means what kind of a triangle am I looking at right now, considering that both the circles are of the same radii? What kind of a triangle am I looking at right now? Isosceles. Not an isosceles Equilateral. triangle. I'm looking at an equilateral triangle। ठीक है, what am I looking at? I'm looking at an equilateral triangle। अच्छा, I'm looking at an equilateral triangle ऊपर, and I'm looking at an equilateral triangle नीचे भी। ठीक है, so that's what I'm looking at। So yeah, अच्छा, अब considering it's an equilateral triangle, if I ask you guys to tell me what this angle is, 60। ये होगा आपका 60, लेकिन रेडियन में क्या होगा, सिंस पाई 180 के बराबर होता है और 60 जो होता है 180 डिवाइड बाय 3 होता है, so that means this angle will be pi upon 3 and so will this angle be pi upon 3। ठीक है, pi upon 3 और pi upon 3 आपका ये एंगल्स होंगे। अच्छा, अब आपने निकालना क्या है, ये जो सारी हम फॉरी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट समहाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऐसे नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि ये लो फॉर्मूला, ये लो वैल्यूज और निकाल लो। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो इट्स काइंड ऑफ जम्बल्ड अप। ठीक है, इट्स इन बिटवीन सम शेप। ठीक है, जिसमें से आपको एक शेप का एरिया निकालना पड़ेगा, एक शेप का एरिया निकाल के माइनस करना पड़ेगा, एंड देन समथिंग अलोंग दोस लाइंस। सो वी फिगर्ड आउट कि every angle is pi upon 3, ऊपर वाला angle pi upon 3, नीचे वाला angle pi upon 3, which means that if I have the liberty of getting rid of this line, and if I just consider this angle right here, so I know कि बराबर होगा 2 upon 3 pi के। ठीक है ना, बिफोर आई मूव ऑन आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को 2 upon 3 pi वाली चीज समझ आए, तो मुझे बता दें क्विकली, गिव मी अ यस और नो अगर ये 2 upon 3 pi वाली चीज समझ आए आपको या नहीं। जी सर समझ आ गई है। Basically what अब we've इससे done दोनों is एंगल्स को pi प्लस कर upon दिया 3 ना। plus pi upon 3। Yeah, absolutely, pi upon 3 plus pi upon 3। Okay, awesome। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई, then you'll probably understand what I'm about to do next also। So if I now erase these two lines and just make a dotted line over here, then you will probably be able to understand where I'm going with this। Okay, now if I ask you guys to tell me, don't actually find it but just tell me, okay, theoretically if I want this region, okay, if I want the area of this region, तो theoretically मैं कैसे निकालूंगा ये, सोच के, take your time, no rush।
अच्छा चलो, लेट मी मेक इट स्लाइटली इजी फॉर यू, ठीक है, ओनली स्लाइटली। सर हाँ बोलो बोलो। सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। Excellent, excellent. Sector का area minus triangle का area. So basically, if I look at this thing that I've outlined in red, so this is a sector. Okay, so what I've outlined in red is basically a sector. So what I'm trying to, so basically area of the shaded region जो मैंने green किया है, ये theoretically हम कैसे निकालेंगे? Theoretically हम ऐसे निकालेंगे area of sector minus area of triangle. ठीक है, area of sector जो मैंने red से outline किया माइनस द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको I'm just trying to lay it out so that you guys know exactly what I'm doing here. ठीक है, so what will I have? I'll have the area of the shaded region. अच्छा, अब do not worry about what r is equal to. We just wanted one angle to start with. We had the angle by figuring out that we were looking at an equilateral triangle, and now we know that we're looking at the angle that we have was pi upon 3 initially because it was an equilateral triangle, hence 60 degrees. Now, since हमने दोनों 60 या pi upon 3 को मिला लिया, we're looking at 2 upon 3 pi. Okay, now एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जरा बताएं। सर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल। ए बी साइन सी, उसमें हम बेस हाइट नहीं बोलते, उसमें हम ए बी साइन सी बोलते हैं। ठीक है, सो विल डू 1/2 टाइम्स ए टाइम्स बी टाइम्स साइन थीटा। And यहाँ पे remember that your calculator, got to make sure that your calculator is in radian mode. Okay, so here's what I'm doing: 1/2 times r square times 2 upon 3 pi. ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से हम माइनस करेंगे 1/2 टाइम्स r square टाइम्स साइन ऑफ 2 upon 3 pi. ठीक है, so let's work this out. Make sure that your calculator is in radian mode. 2, so sine fraction 2 upon 3 pi bracket close. So I'm looking at root 3 upon 2. तो हो जाएगा root 3 upon 2 r square into 2, तो root 3 upon 4 हो जाएगा। ठीक है, so I'm just going to write it as root 3 upon 4 initially, straight away, sorry. और ये हो जाएगा आपका 2 pi upon 6 r square. अब ये मुझे देगा 1/2 of the shaded region. So how will I get the other half? क्या मैं ये सारी पारी दोबारा करूं? बताएं जी, how do I get the other half? ठीक है, meaning that I've figured out this half. How do I get this region, the one that I've not highlighted, जो ये black line की left side पे है, ये कैसे आएगा? कोई कुछ कह रहा है? Well, तो मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। सर इसका एरिया भी सेम होगा। इसका एरिया भी सेम होगा। So all we got to do is we just got to multiply it by 2. ठीक है, so once we figured out 1/2 of the shaded region, all I need to do is I just need to multiply it by 2. ठीक है, so let's see what this turns into. This turns into 4 upon 6 pi r square minus 2 root 3 upon 4 r square. ठीक है, this is what this turns into. So 4 upon 6 हो जाएगा 2 upon 3 pi r square minus 1/2, या सीधा सीधा आप इसको root 3 upon 2 कर लो, root 3 upon 2 r square. At the back you might notice कि उन्होंने कुछ common दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, that's fine. यहाँ पे आपका आंसर जो है it's final. ठीक है, I mean it can qualify as a final answer, but at the back if they've taken the LCM and if they've taken something common, that's fine. You guys need not worry about it too much. ठीक है, so before I, यहाँ पे हमारा जो बुक से जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए। ठीक है ना, before I move on to past paper questions, I would like to ask कि ये क्वेश्चन पहले सबको समझ आया? Only then I think it would be a good idea to move on to past paper questions. जी सर समझ आ गया। Alright, sounds good. अच्छा, so
सर वो डिग्री टू रेडियन करते थे 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। नहीं, इनटू डिग्री टू रेडियन हम करते हैं इनटू पाई अपॉन 180। पाई डिग्री, अपॉन हाँ, 180। इनटू पाई अपॉन 180। यस, ठीक है सर। ठीक है। Okay, so I am going to clear this up. Okay, now अब कॉस्ट पेपर क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो काफी काफी तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, यू विल फाइंड इट हैज अ बिट ऑफ इनकंसिस्टेंसी टू इट। ठीक है, मतलब you'll find a question, so what I'll do is before I solve a question, मैं पहले जरा उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो रेट कर दूंगा। ठीक है, फिर या पहले हम उसको सॉल्व करेंगे आई थिंक, फिर हम उसका डिफिकल्टी लेवल रेट करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी wise thing to do। ठीक है, so I am going to start off with a question that's easy so that आप लोगों का भी जरा थोड़ा confidence boost हो जाए, and then gradually we're going to take it up a notch and we're going to try and solve at least, कितना टाइम है, 1 घंटा है ना, we're going to try and solve at least 4 to 5 questions। ठीक है, so like I said, I'm going to start with a question that's easy so that you guys don't lose your interest. Khair, I mean, you guys don't have an option anyway. It's something you've opted for, so you got to do it. So here is a question from May June 2018, paper 1, variant 3, so fairly recent। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही outdated है। So a question like this is like a, कहते हैं ना, it's a steal, so it's a bonus for you if a question like this comes। And again, I'm not trying to freak you out कि अगर इससे हट के कोई सवाल आ गया तो आप कहे, ऐसा नहीं है। But do not think कि जैसे फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स में अगर आपने एक टॉपिक कर लिया, let's say आपने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, आपने 4-5 क्वेश्चंस उसके कर लिया एज प्रैक्टिस, दैट्स इनफ। ऐसा नहीं है, इसमें 4-5 क्वेश्चंस करके भी is not enough। You need to practice at least 10 to 12 questions of every single topic to make sure that you have a grip on the topic। ठीक है, so that you're familiar with, you know, सारे season से आप familiar हो जाए। ठीक है, season where the question was difficult, season where the question was easy, so you know you need to basically see it all in order to get a good grip on this topic। And it's not like ये question जो है मैं कहीं अलग से लेकर आ रहा हूँ कि बुक से ऐसे questions लेकर आ रहा हूँ जो past papers में नहीं है। These are all past paper questions। Okay, anyway, so that's having said that, let's start। So it says the diagram shows a triangle OAB in which angle OAB is equals to 90 degrees। So even if the question hadn't told you कि 90 degrees है, और अगर वो instead आपको बताया था कि line AB is a tangent to the circle with center O, should have been enough information for you to figure out कि angle OAB जो है आपका वो 90 degrees होगा। ठीक है, and I hope everyone understands what I'm saying here। Radius and tangent, whenever they meet, they make an angle of 90 degrees। Okay, फिर सीन ये है, the arc AC is part of a सर circle आप थोड़ा लैग कर रहे हैं, मेरे साथ ही है या फिर सबके साथ हो रहा है? I'm lagging। बता दें सब, is that the case with you guys also? सर बीच में थोड़ा सा होता है। अब सही है सुहान? जी सर अब सही है, वो एकदम basically- हो जाता है, देन आप पॉज रहते हैं। अच्छा, सॉरी। सो बेसिकली मैंने ये कहा था कि आप you need to practice at least 10 to 15 questions of a certain topic to make sure that you have a good grip on it। And the question that I'm doing right now is relatively easy, or like I said, towards the end we'll mark the difficulty level also on a scale of 1 to 5। So it says here, okay, the arc AC is part of circle with center O. The arc has length 6 centimeter and it meets OB at C. Find the area of the shaded region। So again, theoretically, area of shaded region कैसे निकालेंगे? Just give me the theoretical part of it। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। Excellent। Area of shaded region in this case will be area of triangle। कौन सा triangle? आपका OAB minus the area of sector OAC। ठीक है, ओके। सो इफ आई वांट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे मेरे पास सारे डायमेंशंस नहीं है कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकालूं। हाँ, एज फार एज एरिया ऑफ सेक्टर गोज, वो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो इनफैक्ट एक काम करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर आसानी से निकल सकता है, सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कलर कोड इट फॉर यू गाइस सो इट्स इजी फॉर यू टू कीप ट्रैक।
area of sector. यहाँ पे बताओ what's a good formula to use over here to calculate the area of the sector. We know two formulas, right? एक हमें पता है half r square theta और एक हमें पता है half rs. Which one is a good formula to use over here? And also tell me why. Half Sir, half RS. RS. Half rs is good because we have the arc length and we have the radius. So I'm going to go with this formula, and I will say area is equals to half times 5 times 6. 5 times 6 is 30. 30 upon 2 is 15. 15 centimeter square. Isko hum rakh dete hain side pe. Now let's bring all our attention towards finding the area of the triangle. Now, quick question. In order to find the area of the triangle, do we as of now have sufficient information to do so? नहीं सर, हमें एक और लेंथ चाहिए होगी। हमें या तो एक और लेंथ चाहिए होगी, या हम अगर एक एंगल भी निकालने हैं तो उस एंगल से भी काम बल्कि नहीं होगा, हमें एक और लेंथ चाहिए होगी। आप सही कह रहे हैं। सो हमें पहले एंगल निकालना पड़ेगा, फिर हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं मिलेंगे ज़ाहिर है 5 मार्क। अच्छा, एंगल कौन से निकालें? व्हाट एंगल कैन वी फाइंड राइट नाउ? ये बताओ जरा। सर हम AOC बेसिकली ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? विल यूज S इज इक्वल्स टू r थीटा। S है हमारा 6, R है हमारा 5, थीटा क्या है नहीं मालूम, बट कोई बात नहीं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू फिगर इट आउट। 6/5 is 1.2 radian. ठीक है, now that we have theta as 1.2, again not enough information for us to figure out what the area of the triangle is going to be. So कोई बात नहीं, as Zohan said, we can figure out another length. अच्छा, अब कौन सी length figure out करनी है? Well, you can work out OB, but if you do work out OB, remember you can't use half into base into height. You will have to use half into A into B into sine theta. Or you can work out AB, in which case you can use half into base into height. Okay, so that's entirely up to you. I'm going to go with AB. Okay, so AB is the opposite length. Okay, and this is the adjacent length, which is equal to 5 centimeters. So what trigonometric ratio am I going to use? I'm going to have to go with tan. So I will say tan of 1.2. Make sure your calculator is in radian. Is equals to AB upon 5. So AB हम निकालते हैं कैसे? Tan of 1.2 bracket 1 times 5. So I'm looking at 12.86. इसको मैं भी 12.86 इसलिए ले रहा हूँ because it's not my final answer. In fact, I would suggest कि अभी आप इसको अपने कैलकुलेटर में संभाल के रखें इस वैल्यू को। ठीक है, क्यों? ताकि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने लगे तो you do half times base को 5 ले लो times AB, and when you're writing AB, make sure to use the answer key over here. आपके कैलकुलेटर में जो आंसर की है ना वो यूज कर लो, so that you end up using this value straight away. ठीक है, and that's it, half times base times height. So that's what I'm going to do now. 0.5 into 5 into answer key. So I'm looking at the area of triangle. So area of triangle मेरे पास आ रहा है 32.15 centimeter square. अब area of shaded region निकालने के लिए we're just one step away. Area of shaded region is equals to 32.15 minus 15. So इसमें से 15 minus कर लो. So I'm looking at 17.15 centimeter square. अब मुझे बताओ आप लोग, आप इसको क्या रेट करेंगे on a scale of 1 to 5? 5 being the most difficult, like insanely difficult, and 1 being like retardedly easy. 2. That's what I was thinking. 4? ये क्या हो गया? अगर आप इसको 4 कह रहे हैं तो फिर तो आपका स्केल जो है वो अभी कटने वाला है। अगर आप इसको 4 कह रहे हैं, ये आईपैड कितना जीबी आपके वाला? ये है मेरा, अच्छा सवाल किया आपने। आई थिंक 128 है, 256 है। 128। Although ये आपके लिए काफी रहती है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि 128 काफी है, लेकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में, और अभी तो मैंने इसको कल इनफैक्ट मैंने खाली किया है, कल या परसों मैंने अपना सारा डेटा मैकबुक पे डंप किया। सो यू कैन सी कि ये मेरा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। दिस अलोन टेक्स अप लाइक 14-15 GB, और ये तो अभी कम है, वरना ये मैंने अभी खाली किया है। इफ यू लुक एट माय गैलरी तो यू नोटिस कि मैंने अभी सर वो मैं iPad 8 का देख रहा था, वो 32 GB में ही है। तुम्हारे लिए काफी है, 64 में भी नहीं मिला। तुम वीडियोस तो नहीं बनाओगे ना? फॉर अ कंटेंट क्रिएटर आई थिंक कम है, 128 कम है, बट फॉर स्टूडेंट आई थिंक। सर इसमें दूसरी वो एक्सटर्नल वो हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट रहती है ना?
हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। आई डू हैव इट इन फैक्ट। मैं उसमें अपना, अगर मैं फ़ोन से कोई वीडियो बनाता हूँ, जैसे व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मैं पहले फ़ोन से आई रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड आईपैड पे स्क्रीन। सो पहले मैं उसको वीडियो को अपने आईपैड पे ट्रांसफर करता हूँ। एक वो आती है, यूएसबी आती है here. So you can see that this is type C. इधर यूएसबी है, आगे कोई डोंगल लगा लोगे तो, सॉरी ये लाइटनिंग है जो पुराने वाले आईपैड में लगती है, ये रेगुलर यूएसबी है, एंड देन हियर्स अ डोंगल टाइप सी टू यूएसबी। आईपैड खरीदने यस के बाद आपको बहुत सारे डोंगल्स खरीदने पड़ते हैं, तो आपका जितना खर्चा आईपैड में हुआ है ना, उसका क्वार्टर खर्चा आपका डोंगल्स खरीदने में होता है। तो मैं आपको अपने डोंगल्स की कलेक्शन दिखाऊंगा ना, तो आप, खैर अगेन मुझे इसलिए चाहिए होता है बिकॉज आई नीड टू कनेक्ट इट टू अ प्रोजेक्टर एंड ऑल दैट, सो आई एम श्योर आपको तो नहीं चाहिए होगा, but it's a good investment. I will say that as students, so I would strongly recommend. Given that कि आप में इतनी विल पावर है कि आप उस पे पबजी नहीं खेल रहे होंगे बैठ के, तो फिर तो मैं जरूर recommend करूंगा कि आप करें, मतलब do invest सर in अभी गेम से वाकई में दिल उठ गया, अब दिल खेलने का दिल भी नहीं करता, पहले शौक होता था, अभी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, if that's the case तो अच्छी बात है। Otherwise, like I said, I would not. I will recommend it, but again, the condition ये है कि we don't end up spend too much time on games. Anyway, so coming back to सर this, सर yeah. वैसे ये वाला जो सारा एक फाइल सी जो आपके पास ये वाली आपने खोली हुई है सर, ये आप गूगल क्लासरूम पे सेंड कर देंगे ये सारे ये वाली, क्वेश्चंस वाला? या श्योर श्योर बिल्कुल। ये तो आपने, मैं क्यों मना करूंगा उसको। ये और साथ में जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं वो भी आपको दे दूंगा। खैर, एनीवे, सो कमिंग बैक, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, ऑनेस्टली आई वुड गिव दिस अ 2। ठीक है ना, 2 out of 5। ठीक है, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन व्हिच इज स्लाइटली, ओनली स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। ठीक है, और खासतौर पे ये जो आपके एग्जैक्ट लेंथ वाले है ना, ये मैं बुक में भी इसीलिए इस पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा था बिकॉज ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। इनफैक्ट ये तो आपका रीसेंट सवाल है, इट्स फ्रॉम May June 2020, पेपर 1 रीडिंग 2। ठीक है, सो ऑल इन ऑल दिस इज अ 3 + 2 5, 5 + 2 7 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, एंड 7 नॉट सो इजी, बट अगेन नॉट टू डिफिकल्ट मार्क्स, बट अगेन रेट हम इसको बिल्कुल एंड में करेंगे। So it says here in the diagram, OAB is the sector of a circle with center O and radius 2r. Angle AOB is 1/6 pi radians. The point C is the midpoint of OA. You can see that. साथ साथ diagram को भी देखते रहो कि point C जो है वो OA का midpoint है। ठीक है, show that the exact length of BC, so BC is this, ठीक है, is r square root 5 - 2 √3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, if you want this length that I'm highlighting in green, ठीक है, कैसे निकालेंगे? What triangle are we going to consider? What rule are we going to use? And how सर exactly are we going to figure OCB it out? एंड कोसाइन वाला फॉर्मूला लगा के Very फाइंड आउट good. We're करिएगा। going to use cosine rule because we have two sides and we have an included angle. ठीक है, so I'm going to use cosine rule. I'll write it over here also, cosine rule. And the reason why I'm using cosine rule is because I have two sides. वो कौन सी हैं? वो हैं आपकी r and 2r। ठीक है, and I have an included angle, और वो included angle कौन सा है? वो है आपका 1/6 pi radian। Okay, so I will say that BC squared is equals to R squared. अब be very careful here, इधर मुझे डर है कि आप लोग, आप में से कोई जो है वो इसको 2R squared लिख लेंगे। चलें बताएं मुझे इसमें क्या गड़बड़ है, या कोई भी गड़बड़ नहीं है। सर ब्रैकेट में ये लिखेंगे 2r स्क्वायर। होल स्क्वायर था। 2R होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लीज ये एरर्स में जब भी देखता हूँ मुझे काफी दुख होता है। वैसे तो यहाँ पे you're lucky कि उसने शो किया हुआ है, so maybe when you're unable to show that this is what it's equal to, you might end up rechecking and figure it out, and then end up figuring out कि क्या error है, but be very careful not to make such errors. So BC squared is equals to R squared plus 2R whole squared, तो ये हो जाएगा R squared plus 4R squared minus 4R squared। ये मत करना कि ये 4R squared और ये 4R squared माइनस कर दिया। ठीक है, इस 4R squared से cos 1/6 pi multiply हो रहा है, which I need to figure out what it is and leave it in exact form only। ठीक है, so cos 1/6 pi is √3/2, so 4R squared √3/2। सो अब जो आपका BC स्क्वायर्ड है ये हो जाएगा 5R squared minus 4R squared √3/2। इसको आप सिंप्लीफाई जरूर करें। इसको सिंप्लीफाई कैसे? 2 1s are 2 2s are। ठीक है, ट्राई एंड स्ट्रेच इट आउट एज मच एज यू कैन। पूरा पेज दिया हुआ है आपको 2 मार्क का सवाल करने के लिए, so that you don't end up making a silly error. So you're looking at 5R squared minus 2R squared
under root 3. So although it's not exactly the same as what we're supposed to bring it, but you can probably see where we're going with this. ठीक है? So सबसे पहले तो मुझे बताओ, what can I take common over here? सर आप r ले सकते हैं. Just r or r square? Sir, r square. R square common निकाल सकते हैं. So if I take r square common, so I'm looking at 5 minus 2 under root 3. ठीक है? अच्छा, अब how do I get rid of the square on which is on BC? सर वो रूट ले लेंगे. Yep, I'll take the square root on both sides and then see the magic. जब मैं square root लूंगा, तो r square is something जिसका square root निकल सकता है. So r square का square root होके क्या रह जाएगा? R रह जाएगा. ठीक है? And as far as 5 minus 2 under root 3 goes, there's not much we can do about it. Okay, so we'll have to leave it inside the square root. Now, if you look at this, and if you look at what we were supposed to show, you can see कि दोनों आसान है. Okay, so theoretically, all you needed to know over here was cosine rule in order to get this right. But see how just knowing cosine rule isn't enough. You need to be very careful. Make sure कि आप कोई sign error ना करो, कोई calculation error ना करो. Make sure your calculator is in radian mode also. So yeah, खैर ये तो सिर्फ part A था. समझ आ गया सबको? बताएं जरा, give me a yes or no so I can decide whether easy to है. move on or not. चलो अच्छी बात है. Yes, sir. That sounds good. Saliha again late. और कौन लेट है? फुवत, I think आप भी लेट हैं. नहीं, फुवत तो चले गए. उसकी याद नहीं है. अच्छा, रीना, I think आपने भी लेट ज्वाइन किया, if I remember correctly. Okay, part B. Part B says find the exact perimeter of the shaded region. Okay, so we're looking at the shaded region. Okay, this is fairly easy. Now, shaded region का perimeter निकालने के लिए there are technically, अच्छा पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो जरा इसका हम ले लेते हैं. इसमें आउटलाइन फाइंड कर देंगे AB की. इसमें हम Request आउटलाइन कर देंगे. फाइंड कर देंगे. Yes, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जरा हम. ओके, सो सही कहा आपने. इसमें हम AB की आर्क लेंथ निकालेंगे. ठीक है, वी हैव द लेंथ BC. सो AB जो आपका आर्क है वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे, S is equals to R theta. ठीक है, इधर मैं कॉलन लगा देता हूँ. ठीक है, I'm talking about this length. So R क्या होगा जरा हमारा बताओ? What is the radius going to be? सर R2R हो जाएगा. 2r हो जाएगा. And what about theta? Theta होगा आपका 1/6 pi. So that means S is equals to 1/3 pi r. R pi लिखो या pi r लिखो. Normally unknown को end में ही लिखा जाता है. ठीक है, 1/3 कैसे हुआ? 2.6 into 5. Okay. So we have the three lengths. ठीक है, that we need to find. अब perimeter निकालने के लिए we will do r plus 1/3 pi r plus the length BC, which we figured out, r square root 5 minus 2 under root 3. ये था ना, या 3 under root 2 था? ये था 2 under root 3. ठीक है, so ये आ गए हमारे कितने? ये आ गए हमारे 2 marks. Now next part, although I haven't seen it, but I'm pretty sure area होगा. Yes, find the exact area of the shaded region. ठीक है, so these are predictable questions. अब मुझे बताओ area of shaded region कैसे निकालेंगे? Area of triangle minus area of sector. Area of triangle minus area of sector. बल्कि मैं काम करता हूँ, this question I will give it to you guys as homework. ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि क्लास एंड हो रही है. दिस आई वांट यू गाइस टू कंप्लीट लेटर ऑन. और ये मैं यहाँ पे डेट पे लगा देता हूँ ताकि याद रहे. और डेट है 2 नवंबर 21. ओके, सो अच्छा, ऑन एरिया यू गाइस कैन इमेजिन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे. इतना मुश्किल नहीं है. इसको डिफिकल्टी लेवल ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड से, 1 to 5 आई वुड से दैट दिस इज. क्या आप लोग क्या कहेंगे? पहले आप लोग बताएं. सर मैं तो इसे 2 या 1.5 आई गेस. 2 से 2 out of 2 2.5 से. ठीक है ना, 3 कर लेते हैं चलो, या 2.5 कर लेते हैं चलो. 2.5 out of 5. ठीक है. अच्छा, now I'm gonna amp up the difficulty level slightly. ठीक है, and we're gonna do a slightly more difficult question. फिर हम करेंगे कुछ ज्यादा ही difficult question. ठीक है, so like I said, we're gonna do 5-6 questions. So this is number 3. ठीक है, एंड इसके बाद वी विल डू वन मोर. और ये बाय द वे ये सबसे रिसेंट सवाल है अभी तक का, मई जून 2021. पेपर अलग, ये पेपर अलग बात है कि पेपर हुआ ही नहीं.
but this is what it is. Anyway, so it says here, show that angle PCS is equal. अच्छा wait, ये ऊपर सारी कहानी तो पढ़ी नहीं, ये बहुत जरूरी है by the way पढ़नी. The diagram shows a symmetrical metal plate. The plate is made by removing two identical plates from a circular disc with center C. So the key word here is identical. So that means we know कि ये length में same है. The boundary of the plate consists of two arcs, PS and QR. So this is the two arcs that the question is talking about. With PQ and RS as diameters. So PQ और RS जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से जो आपने सर्कल निकाला था, ये उसका डायमीटर. ये मत समझना कि ये पूरे सर्कल का डायमीटर है. ये जो आर्क आपने निकाला था, सर्कल आपने निकाला था, ठीक है, जो कि इनिशियली ऐसे था, ठीक है. इनिशियली ये था ऐसे. This is what it was like probably. तो ये जो आपने निकाला था, ये उसका डायमीटर है, ठीक है. And then the question says the radius of the circle with center C is 4 centimeter and PQ is equals to RS, which is 4 centimeter also. So that means कि जो आप लेंथ ग्रीन से देख रहे हो डॉटेड, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. इसको मैं एक काम करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में मैं इधर एरो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि चल क्या रहा है. So this right here is 4 centimeter, ठीक है, and so is this. And जो circle आप देख रहे हो, ठीक है, the bigger one, so yeah, which is, by the way, which is this circle. बैठ गया, खैर. या सो ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इसका जो रेडियस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट. अब ये जो सब मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आपने खुद करना है. रिमेंबर टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल सो दैट इफ यू गेट इट रॉन्ग यू कैन ऑलवेज इरेज इट एंड डू इट अगेन, ठीक है. अच्छा, अब ये जो सर्कल मैंने बनाया है मैं हटा रहा हूँ because आपको ये दिया हुआ नहीं है. So if I make the circle, so things will become slightly easy for you, but that's something that we will do later on आगे just question में जाके. So it says show that angle PCS is 2/3 pi radian. ठीक है, क्या कह रहे हैं सवाल आपसे कह रहे हैं angle PCS, which by the way hasn't been drawn for you, but we're supposed to show कि ये किसके बराबर है. ये बराबर है 2/3 pi radian के. अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है. My question to you is very simple. If you look at this triangle right here, so what kind of triangles are we looking at? कौन से? ये वाले जिनको मैं blue से shade करने लगा. So the triangles that you're looking at in blue, what kind of triangles are these? Equilateral triangle, very good. ठीक है. क्यों? क्योंकि PQ4 है, QC4 है because वो circle का radius है, और PCB4 है because वो भी circle का radius है. So we're looking at equilateral triangles. So yeah, we're not assuming that we're looking at equilateral triangles. We know for a fact that we're looking for equilateral triangles. And remember, जब भी आपको कोई starting value ना दी हुई हो ना, other than the radius, और आपसे angle निकालने को कह रहा हो, and you're not given the arc length, so always try and look for equilateral triangles. ठीक है, कहीं ना कहीं आपका equilateral triangle बन रहा होगा. अब please do not remember this the wrong way कि आप जबरदस्ती equilateral triangle बनाना शुरू कर दें, but do look for equilateral triangles because we just saw that this happened 3 times so far. ठीक है, so remember that कि कहीं जैसे मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं होती, ठीक है, लाइक आई सेड, और सॉरी इनफैक्ट आई वाज सेइंग समथिंग एल्स कि अक्सर ओ लेवल्स में एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स करते हुए ऐसा होता है ना कि एक प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा छुपी हुई आती है, वो है आपकी सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी. सो रिमेंबर आई यूज्ड टू से कि try and always look for that same segment वाली property. So here also try and always look for the equilateral triangle. अच्छा, अब here's the thing, PCS तो हुआ ये angle. Now there is no direct way of figuring out what this angle is, ठीक है, but there is an indirect way. So if I ask you guys what is that indirect way, बता सकते हैं आप लोग मुझे?
सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? My question is that there is no direct way of figuring out PCS. There is, however, an indirect way of figuring out PCS. So बता सकते हो कि वो कौन सा indirect तरीका है? सर पाई रेडियन माइनस ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल है। Very good, very good, very good. अच्छा अब हम हाँ सही कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया। अब बेसिकली here's what we're gonna do. SCR हम निकालते हैं। So SCR is equals to pi upon 3। अब आपने एग्जामिनर को बताने के क्यों pi upon 3, ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी, आपने बस लिख दो कि ट्रायंगल SCR is an equilateral triangle, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे कि यार मैंने लिख तो दिया बट यू नो आई होप द एग्जामिनर डजंट अज्यूम कि मैंने अपनी तरफ से बस एक assumption की है। जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन ताकि आप खुद भी यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। उसके बाद इफ यू वांट एंगल PCS so you'll do pi minus pi upon 3 which is equal to 2 upon 3 pi, ठीक है। so ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका PCS which is equal to 2 upon 3 pi। अच्छा उसके बाद the question says find the exact perimeter of the plate। okay now theoretically if you want the perimeter तो पेरीमीटर में मुझे बताओ कौन कौन सी लेंथ्स आएंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं जरा इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करके इसका स्क्रीनशॉट करके इसको हम कॉपी करके and I just put it here। Okay, so theoretically if I want the perimeter of the plate, ठीक है, I hope this isn't too light for you guys। yeah, theoretically if I want the perimeter of the plate तो मुझे बताओ उसमें कौन कौन सी लेंथ्स आएंगी, और थोड़ा मुझे इसको लेबल करके भी, मतलब लेबल नहीं स्पेसिफाई करके बताएं कि व्हाट लेंथ्स am I going to consider। PS and QR plus SR and QP। ठीक है, PS and QR and SR and QP, ठीक है, और ये सारी हमारी आर्क लेंथ्स, ठीक है। अब द गुड थिंग इज कि हम PS और QR जो आर्क लेंथ्स है हमारी, PS is equals to QR और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी आर्क्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल आर्क लेंथ्स दैट वी कैन वर्क आउट। कैसे निकालेंगे हम इसको निकालेंगे S is equals to R theta। So if I want the arc length, so S is equals to R, हमें पता है कि 4 है, theta we just worked out to be equal to 2 upon 3 pi, सही है। So that means ये हो गया हमारा 8 upon 3 pi, और ये अगर हमारी 8 upon 3 pi है तो ये भी हमारी 8 upon 3 pi होगी, ठीक है। Does everyone understand this part? यस सर। Okay. Now अब मुझे बताओ कि PQ और यहाँ SR कैसे निकालूंगा। सर उनका डायमीटर है, उसको हाफ करेंगे और हमारे पास उनका वो भी है डिग्री पाई अपॉन 2। Do we need the degree? ऐसे पाई अपॉन 2 डिग्री नहीं है, एंगल 2 pi upon 2 होगा, but we don't need that do we, because ये तो हमारा सेमी सर्कल की circumference है ना टेक्निकली। PQ which is equal to SR ये टेक्निकली आपके सेमी सर्कल circumference है। Get it? यस सर। Okay. So semicircle की circumference हम निकालते हैं 2 pi r। अच्छा radius हमारा होगा 2 because the diameter is 4, so the radius is going to be equal to 2, ठीक है। उसको हम करेंगे divide by 2 and we will also multiply it by 2 because we have 2 of these, ठीक है। So 2 से 2 cancel हुआ, now we have 4 pi। अब ये हमारा 4 pi है, sorry in fact wait, अक्सर 2 से multiply करने के चक्कर में ये होता है कि आप हमें काम करते हैं उसको 2 से multiply नहीं करते, ठीक है, हम एक निकाल लेते हैं। So that means we have 2 pi। तो अब ये हमारा 2 pi है और ये भी हमारा 2 pi है, ठीक है। So we have 2 pi each। Now we just need to bring it all together and find the perimeter of the plate। So perimeter is equals to 8 upon 3 pi plus 8 upon 3 pi plus 2 pi plus 2 pi, ठीक है। So the final, अच्छा आगे इसकी आगे जगह नहीं है, चलो कोई बात। सर वैसे मेजॉरिटी जगह ये डायग्राम ने ले ली, मैं डायग्राम सेपरेटली इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पहले वाले पे नॉर्मली जो मुझे स्क्रिबल्स की हुई होती हैं, आई वांट टू कीप दैट सेफ फॉर रिकॉर्ड। So yeah, 8 divided by 3 into 2 plus 4 plus 4. So we're looking at 40 upon 3 pi। ये आ गया हमारा exact perimeter of the plate।
अब मुझे बताएं आप लोगों को समझ आया? सर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर देंगे इसका, लाइक बिल्कुल ओवरव्यू कर लेंगे, करना चाहिए बल्कि। सो देखो, हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ द प्लेट। पेरीमीटर ऑफ द प्लेट में वी विल हैव हाउ मेनी, 1 2 3 4 डिफरेंट लेंथ्स। अब 4 डिफरेंट लेंथ्स में से आपकी दो दो जो है वो आपकी सेम है। कौन सी? आपकी पी एस और आपकी क्यू आर आर। अब पी एस निकालने से पहले हमें ये एंगल चाहिए जो कि आएगा 2/3 पाई। सो 2/3 पाई ये आया, 2/3 पाई ये आया, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो रेडियस है हमारा 4, थीटा है हमारा 2/3 पाई। सो वी आर लुकिंग एट 8/3 पाई। सो 8/3 पाई ये है, 8/3 पाई हमारा ये है, ठीक है। फिर हमें चाहिए पी क्यू और एस आर। और पी क्यू एस आर अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे सेमी सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाली जाती है 2 पाई और अपॉन 2। सो वी हैव 2 पाई ये आ गई, 2 पाई ये आ गई। अब इन सबको हमने सम कर दिया तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ द प्लेट। I was gonna say shaded region, but perimeter of the plate आ गया हमारे पास। अब मुझे बताओ, समझ आया आप लोगों को? क्लियर है सर। All right. Then the question says, show that the area of the plate is 20/3 पाई। अच्छा, एरिया जो है ना इसका, पेरीमीटर फिर भी आसान था, लेकिन एरिया भी आसान है, given that you don't mess up, but I'm afraid that some students will. I'm not saying you guys will, but I'm afraid that some students will. And you can probably see कि एक 5 mark का question है, so that means there's a lot of working involved over here. Okay, now, अब मुझे एक बात बताओ, again, you know कि probably मैं क्या सवाल पूछूंगा, ठीक है, कि theoretically अगर मुझे perimeter of the shaded, sorry, not the shaded region, perimeter of the plate चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ये बताओ मुझे। Take your time. सर हम ये कर सकते हैं, जो दो सेमी सर्कल है इनके एरिया निकाल के वो बड़ा सर्कल करके इसे माइनस करते हैं। Good going, good going. चलो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जो आप कह रहे हो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन for some reason that's not the final answer. I mean that's not how you do it. You will do that, ठीक है, but that is not going to be enough, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी जो आपने कहा है ना पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें अल्टीमेटली करना है, वो भी आपने बिल्कुल ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए विल डू पाई इंटू 4 स्क्वायर। सी आ गया हमारे पास 16 पाई, ठीक है। सो वी हैव द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, इसको मैं करता हूँ रेड से, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों। फिर लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ 2 semicircles. So let me just write that. Semicircles. Area of 2 semicircles कौन से वाले? ये वाले आपके, ये और ये। इसको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से, so you guys know what's going on here. ये और ये। इसके लिए I will do 2 into pi r square, radius remember 2 लेंगे upon 2, ठीक है। अब सिंस मैंने पहले इसको 2 सेमी सर्कल्स कह दिया इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स भी कर दिया, ठीक है। सो ये 2 हमारा कैंसिल हुआ, सो ये आ गया हमारे पास 4 पाई। यहां तक तो आपने मुझे बिल्कुल सही बताया, बट फॉर सम रीजन, I'm not going to tell you what reason, this is not the final answer. अब ये क्यों नहीं है फाइनल आंसर, उसके लिए ये देखें आप जरा, और अब मुझे बताएं कि ये मेथड जो है वो सही क्यों नहीं। समझ आया? एक हिंट और दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बताओ अब समझ आया कि ये आपको सर वो सर डायमीटर के अलावा भी ऊपर नीचे भी एक्स्ट्रा है जगह। यस 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 यस। सो बेसिकली जो मैंने ब्लू से आउटलाइन किया ये है ना हमारी एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। अब अगर आप इस सर्कल का एक डायमीटर बना लो, ठीक है, यहाँ पे जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, तो यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड व्हाट ज़ैन सेइंग हियर कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देना काफी नहीं। समझा आप लोगों को? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस कर देना काफी क्यों नहीं है? नहीं सर, नहीं समझाया। नहीं समझा? अच्छा, गौर से देखें पहले आप जरा 2 मिनट इसको गौर से देखें। अब मैं बताता हूँ। सो देखो, आप कह रहे हो कि एरिया ऑफ सर्कल निकालें जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये सारा एरिया हो गया, उसमें से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स माइनस कर दें, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये और ये,
ठीक है, ये माइनस कर दें तो फिर आपके पास एरिया ऑफ द प्लेट आ गया। अच्छा सर, समझ आ गया मुझे। क्या समझ आया? समझ तो आ गया सर क्या वो अपने? डायमीटर से जो नीचे वाली चीज है वो नीचे और ऊपर नहीं वाली, तो इंक्लूडेड है। ये वाला जो है ना, ये अड़ गया है बीच में। अब इसका हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस, हाउ डू आई गेट माय हैंड्स ऑन दिस, हाउ डू आई फाइंड दिस? इसके लिए आपको खूब दिमाग लगाना है, इसके लिए ये आपका असल इम्तिहान है। दिस इज व्हाट separates an A level student from an O level student. So चल I'll give you सर guys a वो minute to think. हाँ बोले बोले। ट्रायंगल थी उसमें से हम ये सेमी सर्कल माइनस कर सकते हैं। ट्रायंगल में से सेमी सर्कल माइनस, समझ कौन सा ट्रायंगल, पहले मुझे ये बताओ। आप कह सही रही हैं, मे बी यू नॉट एबल सर टू वो एक्सप्लेन इट बेटर। सॉरी। सर वो पीसी वाली जो ट्रायंगल थी। yes. So basically we need to consider triangle PCQ. अच्छा, PCQ में से हम सेमी सर्कल नहीं माइनस करेंगे। अब अभी आप सेमी सर्कल को देखना छोड़ दें। बेसिकली हम क्या करेंगे, इफ आई लुक एट PCQ, तो PCQ एक सेक्टर बन रहा है ना, PCQ एक सेक्टर। PCQ is basically a sector, ठीक है। तो if you want the area of the shaded region, ठीक है, कौन सा शेडेड रीजन, ये जो मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है, ठीक है। ये अब मैं इससे ज्यादा बेहतर की नहीं बना सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा थियोरेटिकली यू हैव टू डू एरिया ऑफ सेक्टर PCQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर PCQ minus area of triangle PCQ. So sector PCQ, you guys can see the one जिसकी red outline है, जिसका आर्क रेड से बना हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ is PCQ, और इसकी जो थर्ड लेंथ है वो आपकी बनी हुई है किससे, वो आपकी बनी हुई है ग्रीन डॉटेड लाइन से, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, ये तो हम आगे जाके कर ही लेंगे, विल इवैल्यूएट दिस, लेकिन मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि व्हाई डू वी वांट दिस एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर गेटिंग आवर हैंड्स ऑन इट? ये समझ आया सबको? जी सर, आ गया समझ। यस अच्छा, मजेदार सवाल है ना ये? ये कुछ ज्यादा ही मजेदार हो गया। सर पेपर में आ जाए तो फिर बिल्कुल नहीं मजेदार। सर पेपर में बंदों ने ऐसा सवाल देख के डिमोटिवेट हो जाता है, सारा पेपर बर्बाद हो जाता है फिर एक क्वेश्चन की वजह से। यस सर। I wish I could disagree with that, but yeah, मतलब लेकिन देखो, it's a 5 mark question, ठीक है। अगर आप ये वाला, आई एम नॉट सेइंग कि बस कुछ ना कुछ करके मार्क्स ले लो, ठीक है। मैं ये चीज इसलिए नहीं बताता कि यार आप सही ना करो बस कुछ मार्क्स ले लो, ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी से जाना गलत है, ठीक है। इट्स लाइक इज्जत से हारना, हार is still हार, you don't want to lose anyway. So what I'm trying to say is कि don't be so demotivated अगर आप ये चीज नहीं शो कर पा रहे हो, लेकिन कि हाँ यार आपने ये वाला चीज और ये वाली चीज सही की है। So what I'm saying is कि if it doesn't click to you instantly, आप यहाँ तक फिलहाल उसको छोड़ दो, एंड देन कम बैक टू इट, मे बी इट विल क्लिक। अब जैसे ये चीज मैंने सर्कल बनाई तो अब इट डिड क्लिक टू यू, राइट? सो व्हाइल यू आर डूइंग सम अदर क्वेश्चन, योर माइंड इज आल्सो वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन, सो मे बी इट विल क्लिक टू यू कि हाँ यार अगर उसमें हम सर्कल बनाए तो वो एक छोटा सा रीजन है जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद योर ब्रेन विल इंशाल्लाह स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, गिवन दैट ऑफ कोर्स यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट। ये तो एक चीज गिवन है ही है, तो आई डोंट नीड टू एलैबोरेट ऑन दिस। सो या एनीवे, so area of sector PCQ 4 square is going to be 16, ठीक है। 16/2 is 8, so ये हो जाएगा हमारा 8/3 pi। फिर हम निकालते हैं area of triangle PCQ। area of triangle PCQ निकालने के लिए I'm going to go with half into A into B into sine C। sine होगा हमारा 5/3, so let's work this out। sine shift pi divided by 3 into 4 into 4 into 0.5, so I'm looking at 4√3, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये काफी है क्या, और डू आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय समथिंग आल्सो? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पीसी, आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 आल्सो, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को जरा मैं डबल चेक कर लूं, 4 into 4 into 0.5 into sine of 5/3, यप इट्स 4√3, ठीक है। सो इसको हम करेंगे टाइम्स 2, ठीक है। सो आई एम लुकिंग एट 16/3 pi minus 8√3। Okay, now this is it. This is the moment of truth. अब 16 pi minus 4 pi जब हमने किया था तो हमारे पास 12 pi ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। 16 pi
-4 पाई हम कर चुके थे, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं the area of these the region that I have marked in blue, ठीक है, which is 16/3 pi minus 8 under root 3, ठीक है। ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल करना है और वैल्यू को एग्जैक्ट फॉर्म में ही रखना है, do not round it off before you have to. So we're looking at 12 pi minus 16/3 pi minus minus plus हो जाएगा 8 under root 3. So if I work out 12 minus 16/3, so 12 में से minus करते हैं 16/3, so I'm looking at 20/3. So 20/3 pi plus 8 under root 3 is what the final answer is. And don't forget to write centimeter square. Yeah, centimeter square. There you go. मजा आया? और तो कुछ नहीं है? जी सर, आगे मतलब इसको क्या रेट करेंगे आप लोगों ने स्केल ऑफ 1 to 5 द डिफिकल्टी लेवल? सर इसको तो 4 करूंगा आराम से। 4? चलो अच्छी बात है। I would also say that this is a 4 on 5, a strong 4. सर मैं इसको दूंगा 10 out of 5। अभी तो आपने टेनर देखा नहीं है। this is a difficult question और ये है आपका, ये भी आपके पेपर 1 वेरिएंट 2 में है, मई जून 2021 ये पेपर बनता, तो इसकी भी बड़ी मीम्स आती हैं। इस दफा भी बाय द वे एएस का काफी डिफिकल्ट पेपर है। आई डोंट नो इफ यू गाइस फॉलोड, अक्टूबर नवंबर में काफी बच्चे रो रहे थे इसके बाद, बट अगेन यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स। डिफिकल्ट पेपर है, सो ट्राई एंड स्क्रैप ऑफ as much marks as possible. At the end of the day, pray that the threshold saves you. Okay, so अब मैंने कर दिया अपना काम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों के लिए। अब आप लोगों ने करना है अपना काम, और ये कि you guys need to solve a few questions for me. So I'm going to give you guys relatively simple questions for now. सर ये पेरीमीटर रहेगा 29.723। सर मेरा 25.7 है। मैं चेक कर रहा हूँ। सो पेरीमीटर के लिए आपको पहले निकालना चाहिए था आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकाली आप लोगों ने? जी सर, वो 5 आ गई। Arc length 5 आ गई, सही है। So that means this length is 5, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपका 1.25 है ना। अब let's work out this तो हम length। tan यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ tan यूज कर लेते हैं। So we'll do tan of 1.25 equals to BC/4. Can you tell me what length BC is? सर 12.038। 12.038। अभी इसको 12.038 ही करते हैं। अच्छा, अब आपको निकालनी पड़ेगी ये लेंथ। आई वुड सजेस्ट कि आप या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। हम निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। बताओ जरा मुझे AC कितनी आ रही है? सर मेरी AC आ रही थी 12.685। 4 स्क्वायर प्लस 12.038 स्क्वायर। सॉरी, दोबारा बताना कितनी आ रही है? सर 12.685। अच्छा, ये जरा मैं डबल चेक कर लूं। So we're looking at 4 squared plus 12.038 squared, square root of answer 12.685। ठीक है। अच्छा, अब ये AC है। पेरीमीटर में हम AC पूरी नहीं लेंगे, we will take DC। DC कितनी होगी और कैसे निकालेंगे ये बताओ? सर ये -4 कर देंगे AC को। इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। वेरी गुड, ठीक है। So if I subtract 4 from this, so I'm looking at 8.685. So I'll write it as 8.685 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप निकाल लें अपना पेरीमीटर, put it all together. So सर वो you मैंने will माइनस do ही नहीं किया था 5 रेडियस को। plus 12.038 plus 8.685। ठीक है, साले आपने यही किया? यस सर। So 25.7 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, यही है। यस सर। अच्छा, सो एक सवाल और करते हैं, ठीक है, जाने से पहले। फिर I'll give you guys some homework also. चलिए ये करें। This is from October November 2020. इसमें आपने निकालना है एरिया ऑफ शेड रीजन इन टर्म्स ऑफ r and थीटा।
फिर आपने निकालना है, वैल्यू दी हुई है और आपने, बल्कि एक सेकंड इसको हम ऊपर साथ में रख देते हैं, आप लोगों को तो ज़ाहिर ये नहीं चाहिए फिलहाल फॉर वर्किंग। चलो जी, बॉयज एंड गर्ल्स गेट टू वर्क। सर अगर फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट करते हैं आप। मैं कर रहा हूँ। सर ये वैसे सारी फॉर्मूले MF9 पे होती है? यप MF9 में सब कुछ के बनाते हैं, सब डोंट वरी अबाउट इट। Although like I said before, there will come a point कि आपको ultimately सब याद हो ही जाएंगे। सर वैसे ही आई एम आस्किंग दिस सर, ये जो MF9 होती है ये हमारे पेपर के साथ अटैच होता है या फिर वैसे एक अलग से शीट पड़ी होती नहीं है? अलग से मिलती है आपको, which they take it back। मेरे पास है यहाँ पे, I did download it। सर आई थिंक मैंने वो देखी हुई है बट उस टाइम मुझे हाँ, समझ ये नहीं आई। MF9। नहीं, you get this separately and then they take it back from you। जैसे I don't know, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, वो पीरियोडिक टेबल मिलता है, पीरियोडिक टेबल सेपरेटली तो नहीं मिलता तुम्हें करना, साथ ही मिलता है, बट समथिंग लाइक दैट। सर हम वो लोग, जब स्टेपल्ड होता है ना तो वो बड़ा इनकन्वीनियंट सा होता है, तो इस वजह हाँ से वो मैं बैक पूछ एंड रहा फोर्थ करना पड़ता है ना। नहीं नहीं, आपको वो मिलता है अपना, सेपरेटली मिलती है ये, क्योंकि बहुत थिक शीट है, पेपर के साथ नहीं स्टेपल कर सकते। हूँ। ठीक है सर। हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, क्या सीन है? सर कर लिए। पार्ट ए पार्ट बी दोनों? अच्छा, कैन आई हैव द आंसर टू पार्ट ए? यस सर। खैर मैं जरा इसकी मार्किंग स्कीम खोलूँ आपका, सर ताकि मुझे सॉल्व ना करना पड़े 1/2 R into R इंटू 20 पेपर 1 into वेरिएंट 2 sin। सर मुझे आपकी स्क्रीन ही नजर आ रही। है। और भी किसी को नहीं आई? सर वैसे आपकी आवाज भी थोड़ी बहुत लैग कर रही है साथ में। एक सेकंड ठहरो, ठहरना, अब सही हो जाएगा। हाँ अब बताओ, अब सही है?